वालिदैन से गुजारिश है कि स्कूल के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के लिए जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके एंड में आ जाएगा। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. A happy good morning to all of my students, those who are listening to me at the moment. It's biology class of grade 8. So beta, let's begin our today's lecture. Beta, let's take a quick recap of our previous lecture. In previous lecture, we have studied about three main parts of a cell. Number one is cell membrane, number two is cytoplasm, and number three is nucleus, which is present in the middle of a cell. Okay? Now, beta, it's your turn to tell me what are the three main parts of a cell. Who will tell me? Teacher, I would tell you. Number one is cell membrane, which is present at the top of the cell. Number two is cytoplasm, which is a jelly-like substance. And number three is nucleus, which is present in the middle of the cell. Very good. That's like a good student. So beta, today we are going to discuss about the cell membrane in detail. So let's start discussing about the cell membrane. So beta, what is cell membrane? Cell membrane is the outermost boundary of an animal cell. It means कि बेटा सबसे outermost boundary के ऊपर जो है वो cell membrane present होती है. It is also called the plasma membrane. So what is the other name of the cell membrane? Is the plasma membrane. Okay? It surrounds the cytoplasm and nucleus in all the types of cell. You know beta, you can see in the image that basically the cell membrane is surrounding the cytoplasm and the nucleus. You can see that the cell membrane is surrounding the cytoplasm and the nucleus. Okay? Beta, number 4 point is cell membrane is composed of lipids and proteins. It is also called as lipoproteins. What does it mean by? बेटा देखिए, this is the image of a cell membrane. ओके, इसमें आप देखें कि सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों पर कंसिस्ट कर रही है? लिपिड्स पर एंड प्रोटीन्स पर. सो दैट इज व्हाई व्हाट वी आर सेइंग दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स. ओके, एंड पॉइंट नंबर 5 इज it is selectively permeable और semi permeable. It means कि सेल जो है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव चीज़ों को इजाज़त देती है कि वो अंदर आए. सेमी, हाफ. ओके, सेमी परमिएबल होती है और सेलेक्टिव होती है कि हर चीज़ जो है वो बॉडी की हर सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकती. सेलेक्टिव थिंग्स कैन गो इनसाइड द सेल. ओके, is that clear beta? Yes teacher, this is so clear. But teacher, I want to know what is the function of cell membrane and why it is present. Good question beta. Now let's discuss the functions of cell membrane. Beta, cell membrane regulates selective movement of molecules in and out of the cell. As we have discussed, it allows the selective things to come inside the cell of a body. Okay, so just like that, it allows selective things to come in and go out. The other function is cell membrane takes in material by enfolding in the form of vacuoles. It is called endocytosis. बेटा देखिए, सेल मेम्ब्रेन किसी भी मटेरियल को अंदर कैसे लेके जाती है साइटोप्लाज्म में? बाय इनफोल्डिंग इटसेल्फ.
और फिर वो उसका वैक्यूल बना लेती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। यू कैन सी इन द इमेज सेल मेम्ब्रेन खुद को क्या कर रही है? इनफोल्ड कर रही है इनसाइड, देन मेकिंग अ वैक्यूल। ओके, इस तरीके से क्या हुआ? जो भी मटेरियल था वो साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया एंड सेल के अंदर चला गया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस. Endo means inside. Okay, is that clear? Number one function was it regulates the selective movement of molecules in and out of the cell. Number two was cell membrane takes in material. How? By infolding in the form of vacuoles. What does this process called? The endocytosis. Okay, I hope now it's clear to you. Thank you, teacher. It was really interesting. Most welcome, beta. Now let's have a look on your homework today. Question number 1 is, what is the other name of cell membrane? Question number 2 is, what are the functions of cell membrane? Question number 3 is, draw a label diagram of cell membrane. Okay, beta? वालिदैन से गुजारिश है कि दिया गया होमवर्क अपनी निगरानी में करवाएं और इसका टेस्ट खुद या ट्यूटर से करवा के इसकी पिक्चर लेकर स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए ताकि टीचर बच्चे का होमवर्क चेक कर सके। व्हाट्सएप करने के लिए स्कूल व्हाट्सएप नंबर है 032431000802। अल्लाह हाफ़िज़।